हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे अंडरस्टैंडिंग एमएस एक्सेल 2010। योर एम, हमारा लक्ष्य क्या है? टू लर्न अबाउट स्टार्टिंग एमएस एक्सेल 2010, क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक, मॉडिफाई डाटा, इंसर्टिंग रो एंड कॉलम्स, फॉर्मेटिंग स्प्रेडशीट्स, autofills and components of MS Excel 2010, entering data in worksheet, column width and row height, margin cells, कस्टमाइज वर्कशीट टेब। ओके, सो ये हमारा कंप्यूटर का चैप्टर है क्लास 6 का, अंडरस्टैंडिंग एमएस एक्सेल 2010। इसके पॉइंट यहाँ पे एक्सप्लेन किए गए हैं, दिए गए हैं, और इसे हम प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे इस चैप्टर में। एमएस एक्सेल इज अन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स टू स्टोर एंड एनालाइज डाटा। एमएस एक्सेल का वर्क क्या है कि जो हमारे डाटा हैं कि और एनालिसिस है हमारी, जो उसे सेव करना है। इट ऑर्गेनाइजेज डाटा इन द फॉर्म ऑफ द रो एंड कॉलम्स। हाँ, रो एंड कॉलम्स में हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं या फिर डिस्क्राइब कर सकते हैं। यू कैन क्रिएट अ चार्ट एंड ग्राफ्स फ्रॉम द डाटा एंड कन्वर्जी फ्रॉम मोर मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन हो वो भी हम इसमें फीड कर सकते हैं। एमएस एक्सेल इज ग्रेट इंपॉर्टेंस टू those who maintains accounts for sales, bills or do mathematical calculations। मोस्ट ऑफ इसका यूज़ कहाँ पे होता है कि अकाउंट्स डिटेल्स है, सेल्स हैं, बिल्स हैं और मैथमेटिकल्स कैलकुलेशन जो हैं, एज इट यूज टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यूजिंग द डाटा। जैसे बड़ी बड़ी शॉप्स हैं जहाँ पे हमें बिल्स परचेज करने होते हैं, एंट्रीज करनी होती है कि किस ईयर्स में हमारे कितना सेल हुआ था एंड हमने कितनी परचेस की थी। या फिर एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि स्कूल का कोई रिजल्ट है कि 2010 एंड 2012 का, तो उस तरह की एंट्री हम कर सकते हैं। The first electronic spreadsheet software was developed in 1978. It was called VC Clark. Starting MS Excel 2010. Look at here. किस तरीके से स्टार्टिंग होगी। Step 2, open MX Excel R. Step 1, click on the start button. Okay, look at here. यहाँ पे दिया गया है। आप स्टार्ट बटन पे जाके क्लिक कर सकते हो। ऑल प्रोग्राम्स आपको दिखेंगे एंड क्लिक ऑन द ऑल प्रोग्राम्स इस तरीके से। क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके आप क्लिक करिए। क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। आपको वहाँ पे 2010 का जो है वो दिखाई देगा, उस पे जाके क्लिक करिए एंड एम्प्टी वर्कबुक टाइटल बुक 1 इज डिस्प्लेड। वेट, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये रहा। यहाँ आपने क्लिक किया ऑल प्रोग्राम में, स्टार्ट में जाके, फिर यहाँ पे आ गया एमएस एक्सेल 2010। लुक एट्स, ओके, ये रहा। देन ओके, तो ये रही पूरी स्पीड सीट्स यहाँ पे दिखाई गई है। क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार एंड नेम बॉक्स, हाईलाइट हेडिंग्स, वर्कशीट विंडोज रो हेडिंग, वर्कशीट टैब, स्क्रॉलिंग बटन। सो ये रहा, जो आगे या पीछे की तरफ आप घुमा सकते हो उसको कहते हैं स्टेटस बार। शीट 1, शीट 2, कंपोज्ड ऑफ एमएक्स एक्सेल 2010 की ये पूरा कंपोस्ट है इस तरीके से। एंड रिबन, फॉर्मूला बार, आप यहाँ पे फॉर्मूला दे सकते हो कोई भी काउंट करने की या फिर प्लस माइनस जो भी है आपकी, वो फॉर्मूला करने के लिए। कॉलम हेडिंग, माउस पॉइंटर्स, लुक एट्स, आप प्रॉपर तरीके से इसे देख लीजिए। ओके, एक्टिव सेल्स, वर्कशीट टैब सेल्स, ओके, इस तरीके से आएगा। Components of MS Excel 2010. First, a title bar. It is located on the top of the window that show the name of the current workbook. File tab. A green button located at the left tab corner that contains the file menu commands such as new, open, save as. It's a quick access toolbar. It is present on the title bar. It displays quick access buttons of the save, undo and redo commands. Ribbon. This bar has the tabs with group of related commands display on it.
formula bar. It is used to enter the edit formulas and perform calculation on your worksheet data. It is also used for entering and editing all contents. Name box. The address of the active cells is displayed in this box. Worksheet window. It is a single page in Excel, also called it spreadsheet. Status bar. The horizontal bar at the bottom shows various information about the file in which you are working. The right sections of the status bar has a view control button for the spreadsheet. Row. The horizontal divisions on a worksheet are called rows. There are 10,048, 567, 576 row in the Excel sheets. Look at ये है मेन नोटिसेबल पॉइंट है ये कि रो कितनी है, तो यहाँ पे आएगा 10,048 576 रोज हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है। कॉलम, द वर्टिकल डिवीजन ऑन द वर्कशीट आर कॉल्ड कॉलम्स। देयर आर 16,384 कॉलम इन द एक्सेल वर्कशीट। आगे देखते हैं रो एंड कॉलम हेडिंग बटन्स। Work area is divided into row and columns. The row are referred using numbers and columns using the alphabets. The row headings range from 1 to 10,048 576 and column heading range is A to XFD. Cell, the intersections of a row and column is called a cell. सेल किसे कहते हैं? जो रो होती है और जो कॉलम होते हैं जो मिलके बनती है उसे सेल कहा जाता है। अ सेल इन एक्सेल वर्कशीट लुक्स लाइक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है एक्सेल शीट्स में, उस तरीके से होते हैं। एक्टिव सेल, अ सेल इज अ फॉर्मेट बाय इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ रो एंड कॉलम। द करंटली सिलेक्टेड कॉल दैट अपर्स हाईलाइटेड विद डार्क ब्लैक बॉर्डर इन एक्टिव सेल। द डाटा इज एंटर्ड इन एक्टिव सेल। जो डार्क बॉर्डर है ब्लैक कलर की उसे एक्टिव सेल कहते हैं, जिसमें हम डाटा एंटर कर सकते हैं। माउस पॉइंटर, द माउस पॉइंटर इज डिस्प्ले ब्लॉक प्लस साइन whenever it is located in cell on the worksheet. Another common shape of the mouse pointer, the block arrow. Worksheet tab, there can be more than one worksheet in Excel and each has a specific name. Any worksheet can be activated by clicking on worksheet tab. Worksheet tab scrolling buttons, there are arranged on the left side of the horizontal scroll bar. These are used to display the worksheet tabs which are invisible. The tab is clicked to the make worksheet active. अब हम बात करते हैं वर्कबुक। A workbook is a collection of different worksheets. By default, a workbook contains 3 worksheets: sheet 1, sheet 2, sheet 3, and that can be increased or decreased as per the requirement. Creating a new workbook, हाँ, नई वर्कबुक किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं? यू कैन क्रिएट अ न्यू वर्कबुक एनी टाइम बाय फॉलोइंग स्टेप्स. These steps. Step 1, click on the file tab. Backstage view will appear. Step 2, click on the new command. Step 3, click on the blank workbook in the available templates list. Step 3, click on create. There the new workbook file will open and you can start adding your own data. Creating new workbook. Look at here. इस तरीके से आप नई वर्कबुक बना सकते हो। किस तरीके से यहाँ पे दिया गया है, ये रही। ओके, एंड एंटरिंग डाटा इन द वर्कशीट. द डाटा in the form of number or text can be entered by just clicking on the cell and typing with the help of keyboard. You can type data directly into the cell or you can enter using the formula bar. Step 1, click on the cell where you want to enter the data. Look at here, entering data in worksheet. यहाँ पे है, ये रहा सेल। इस तरीके से आप डाटा एंटर कर सकते हो। स्टेप 2 है एंटर द डाटा, मूव डाउन एंड वन सेल, प्रेस द एंटर की. लुक एट हियर्स, ये रहा, आपने इसमें डाटा एंटर किया, जैसे सेल है
जो भी है, फिर एंटर की प्रेस करनी है। रिपीट स्टेप 1 and 2 यू टिल यू फिनिश एंटरिंग योर ऑल योर डाटा। इस तरीके से आप फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेप की तरह से आप सारे डाटा को इस तरीके से फीड कर सकते हो। ये रहा जैसे पेन ड्राइव, माउस, मॉनिटर्स, कीबोर्ड, जनवरी का क्या था, उसका फरवरी का क्या है, मार्च का क्या है, अप्रैल का क्या है। ओके, ये वर्कशीट पूरी तरह रेडी हो चुकी है। यहाँ पे ब्लैंक है और यहाँ पे फीड की हुई है। मॉडिफाइंग डाटा, just like in my MS Word, data can be modified in MS Excel. Cut, copy, paste data. You can use the cut, copy and paste command in the Microsoft Excel to move or copy enter cell of their contents. Wait, move, copy cells. When you move or copy a cell, Excel moves or copy the enter cell contains and cell formats. Step 1, select the cells that you want to move or copy. Step 2, click on cut command in clipboard group on home tab to move the contents of the select cell. Look at here, ये रहा कट एंड कॉपी पेस्ट आपको यहाँ पे होम टैब में दिया गया होगा। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से हमने फीड किया था डाटा। ओके, कॉपी कंटेंट्स ऑफ अ सेल, इस तरीके से आप कॉपी कर सकते हो। पेस्ट मतलब कि अप्लाई कर सकते हो दोबारा से। कंटेंट्स ऑफ अ स्टेप, लुक एट हियर्स, यहाँ से यहाँ प्रेस करके। स्टेप 3, क्लिक ऑन कॉपी कमांड इन क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन होम टैब टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्ट सेल्स। आप होम टैब पे जाके कॉपी कमांड को सिलेक्ट करके और वहाँ से आप कंटेंट्स ऑफ द सिलेक्ट सेल्स को क्लिक कर सकते हो। स्टेप 4, क्लिक ऑन द सेल वेर यू वुड लाइक टू पेस्ट द इंफॉर्मेशन। स्टेप 5, क्लिक ऑन द पेस्ट कमांड इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन होम टैब टू पेस्ट। Column width and row heights. On a worksheet you can specify a column width or 0 of 0.2 255 and a row height of 0.2409. The value represent the number of the characteristic that can be displayed in a cell that is formatted with the standard font. The default column width is 8.43 characters and the default row height is 15 points. If column row has a width or height 0, it is hidden. It is not visible in the grid. Set column width, row height. Step 1, select the column as or row that you want to change. Step 2, click format command in cells group from home tab. Step 3, choose column width or row heights under cell size from the drop down list. Look at here, यहाँ पे है row heights and column heights with format tool under the home tab. आगे बात करते हैं स्टेप 4, अ कॉलम विथ और रो हाइट डायलॉग बॉक्स विल अपीयर्स. स्टेप 5, इन अ कॉलम with a row height box, type or the value that you want to column or row to be. Row height, look at here, 15. आप जो भी हाइट लेना चाहिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, 15 या 12 है, जो भी हो आपकी रो की हाइट. ओके, एंड ओके पे क्लिक कीजिए. रो हाइट डायलॉग बॉक्स, लुक एट हियर्स, आप अच्छे से देख सकते हो यहाँ पे ये रो हाइट कॉलम्स कितने भी नंबर आप यहाँ पे क्लिक करके ले सकते हो. एंड कॉलम हाइट्स 8.43 डायलॉग बॉक्स ओके कर सकते हो. ओके, ऑटोमेटिकली फिट कॉलम एंड रो कंटेंट्स. स्टेप 1, ऑटोमेटिकली क्लिक फिट कैसे होता है. क्लिक ऑन द सिलेक्ट ऑल बटन्स, डबल क्लिक एंड बाउंड्री बिटवीन टू कॉलम्स रो हेडिंग्स. ऑल कॉलम्स रो इन द एंटायर वर्कशीट विल बी चेंज्ड टू द न्यू साइज. Selecting entering worksheet, look at here. All times a cell might display. This can occur when the cell contains a number or a data that exceeds the width or the cell, so it cannot display all the character that it is format required. To see the entire contents of the cell with its current format, you must increase the width of the column.
Inserting row and columns. Inserting row. 2. Insert a row in worksheet to follow this step. Step 1. Click and select the row heading where you want to insert a new row. Select step 3. Click on insert command on the home tab. Look at here. ये रहा होम टैब पे इंसर्टिंग अ न्यू रो। आपको अगर न्यू रो इंसर्ट करनी है सो किस तरीके से आप कर सकते हो, तो होम टैब पे जाके इस तरीके से आपको स्टेप दिए गए हैं। ओके, हम यहाँ देखेंगे स्टेप 3। क्लिक ऑन इंसर्ट शीट रोज। अ न्यू रो इज इंसर्टेड अबाउ द सिलेक्ट सेल्स एंड द एक्साइटिंग रो शिफ्ट डाउनवर्ड्स। नाउ न्यू रो इंसर्टेड। लुक एट हियर, ये हमने यहाँ पे न्यू रो इंसर्ट की है। ओके, इंसर्ट टैब में जाके शीट्स रो में क्लिक करना है। इंसर्टिंग कॉलम्स। हाउ, ये तो हमने रो ऐड की थी, अब यहाँ पे हम देखेंगे कॉलम किस तरीके से ऐड करनी है। टू इंसर्ट अ कॉलम इन अ वर्कशीट फॉलो दिस स्टेप्स। स्टेप 1, क्लिक एंड सिलेक्ट द कॉलम हेडिंग वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू कॉलम। स्टेप 2, क्लिक ऑन द इंसर्ट कमांड ऑन द होम टैब। आप होम टैब पे जाके इंसर्ट कमांड पे क्लिक कीजिए एंड इंसर्टिंग अ कॉलम। लुक एट हियर, आप इस तरीके से कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। स्टेप 3, क्लिक ऑन द इंसर्ट शीट्स कॉलम्स एंड न्यू column is inserted to the left of the selected cell and the exciting column shift rightwards. Look at here, new column inserted. इस तरीके से न्यू कॉलम इंसर्ट कर सकते हो। मार्जिंग सेल्स में देखते हैं। स्टेप 1, मार्जिंग सेल्स किस तरीके से आएगा। सिलेक्ट 2 और मोर एडजेंस्ट सेल दैट यू वांट टू मर्ज। Step 2, click on the merge and center command in the alignment group on home tab. The cell will be merged in a row or columns and the cell contents will be centered in the merge cell. Merge and cell center alignment group under home tab. Under emerged cell, look at here, merged cells यहाँ पे है। ओके, स्पिल्स सेल में क्या आएगा कि स्टेप 1, सिलेक्ट द मर्जेड सेल्स यू वांट टू स्प्लिट। स्टेप 2, क्लिक ऑन द इमर्जेड सेल्स कमांड। द सेल्स विल स्प्लिट एंड द कंटेंट्स ऑफ द इमर्जेड cell will be uppers in the upper left cell of the range of split cell. The text in the emerged cell will appear in the first cell, first to the left of the split cell. Splitting cells, emerge cells, formatting sheets to features enhance your spreadsheet. You can format a number of elements such as text, numbers, coloring and table style. Wrap text. You can display multiple lines of text inside a cell using wrap text features. Wrapping text in cell does not affect other cells. Step 2, click on the cell in which you want to wrap the next text. Step 2, click on the wrap text command from alignments group under home tab. The text in your cell will be wrapped. Text before wrapped, look at here. Text after wrapping. Format numbers. In Excel, the format of a cell separates from the data that is stored in the cells. This display difference can have a significant effect when the data is numeric. Step 1, click the cells that contains the numbers that you want to format. Step 2, click the arrow next to the number format box in the number group under the home tab and click the format that you want to. Click on more number formats option to see more details of number formats in the category list. Click on the format that you want to use and then adjust setting to the right of the format cells dialog box. For example, if you are using the currency format, you can select the different currency symbols. So more or fewer decimation playlist or change the way negative numbers are displayed. Look at here, cell dialog box. Cell borders. By using a predefined border style, you
can quickly or add a border around cell or range of cells. If the listed cell borders do not meet your needs, you can create a custom border. Format number. In Excel, the format of cell is separated from the data that is stored in the cell. This display difference can have significant effect when the data is numeric. Step 1. Click on the cell as the contain the numbers that you want to format. Step 2. Click the arrow number to the next to the number format box in the number groups under the home tab, and then click the format tab you want. Click on more number formats option to see more details of numbers format in the category list. List the format that you want to use and then adjust the setting to the right of the format cell dialog box. For example, if you are using the currency format, you can select a different currency symbols, so more or fewer decimals palace or challenge the way negative numbers are displayed. Apply cell borders. Step 1. On a worksheet, select the cell or range of cell that you want to add a border. To change the border style on or remove a border them. Step 2. Go to the front or group in the home tab. Step 3. Click on the arrow next border command. Step 4. Click on the border style you would like the border will be applied to the cell or cell range. Look at here, applying borders, cell borders. इस तरीके से आप जाके ऑल बॉर्डर्स में से क्लिक करके एंड इस तरीके से बॉर्डर आप आपको जहाँ कहीं भी बॉर्डर चाहिए आप वहाँ पे उस एरिया को क्लिक करके इस तरीके से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हो। गौर से मतलब अच्छी तरह से आप देख लीजिए ताकि आपको इसे समझने में दिक्कत ना हो। ओके, तो टीच फंडा में क्या है? To apply a custom border style, click More Borders in the Format Cells dialog box. On the Border tab under Line and Color, click the lifestyle and color that you want. Remove cell borders. Step 1. Go to the font group in the Home tab. Step 2. Click the arrow next to Borders command. Step 3. Click No Borders. The Borders button display the most recently used border style. You can click the borders button, note the arrow that applies style. Look at here, removing cell borders. Okay. You can create a cell style that included a custom borders, colors and formatting. Step 1. Click cell styles from styles group under home tab. Step 2. Select the different cell styles option you would like to apply to your spreadsheet. देख सकते हो अप्लाइंग सेल स्टाइल किस तरीके से आपने यहाँ पे मतलब हेडिंग एंड कलर्स एंड डेकोरेटिव कर रखा है पूरा टाइटल्स देखिए। ओके, इस तरीके से आप सेल बना सकते हो। फील कलर इन द सेल, फॉलो दिस स्टेप। Step 1. Select the cells that you want to apply or remove field color them from. Step 2. From the font group under home tab, select one of the following option. To fill cell with solid colors, click the arrow next to field colors, and then under them colors or standard colors, click the colors that you want. To fill cells with any other colors of your choice, click the arrow next to field colors, click more colors, and then in colors dialog box select the colors that you want to apply the most recently selected colors. The click field colors. Look at here, अप्लाइंग फील्ड कलर्स टू सेल्स। किस तरीके से आप कलर कोई भी ये रहा यहाँ पे थीम कलर्स में आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप क्लिक करके यहाँ पे कोई भी कलर आपकी पसंद का रख सकते हो। टेक्स्ट color to color the text, follow this step. Step 1. Select the cells range of cells, text or characters that you want to format with a different text color. Step 2. From the front group under home tab, to apply the most recently selected text colors, click font colors. To change the
text color, click the arrow next to font color, and then under theme colors and standard colors, click the color that you want to use. Look at here, text color tool. The color the text follow the step 1. Select the cell range of cells, text or characters that you want to format with a different text colors. Step 2. From the font groups under the home tab. A. To apply the most recently selected text colors, click font colors. B. To change the text color, click the arrow next to font color, and then user under themes colors and standards colors, click on the color that you want to use. Look at your text color tool. Customize worksheet tab. To customize a worksheet tab, follow this step. Step 1. On the worksheet tab bar, right click the sheet tab that you want to customize. Step 2. Click rename. To rename the sheets or tab color, to select the tab color, or delete the sheets. Step 3. Type in the name or select a color you would like for your spreadsheet. The information will be added to the tab at the bottom of the spreadsheets. Customize worksheet tab. Autofill features automatically fills a series of data in your worksheet. It saves your time to complete the text or number series for you. Step 1. Enter the first two numbers you want to start the series with. Step 2. Select both the cells containing the numbers you have entered. Step 3. Position the mouse pointer over the bottom right corner of the last selected cell. The pointer change to plus sign. Step 4. Drag to the mouse pointer over the cells you want to include in the series. The cells display the number series automatically. Look at here, starting autofill. Using autofill. Insert a button on the cells group of the home tab can be used to insert a rows, column, and cells. Two or more cells can be merged into one cell. In Excel, every cell can be formatted differently. There are many options available to customize your Excel workbook, which can make the worksheet easier to read. Autofill is a feature makes Excel which allow user to fill automatically any number or text series.